Hello friends, welcome back to my channel, and this is SK Sharma. And in this video I am again going to tell you a few important questions on IBO 03, and the exams are I think will be started the next month in July. So these questions are very important, and ये questions previous exams में भी बार बार आए हुए हैं, तो काफ़ी मेहनत से इनको सिंप्लीफाई करके मैंने आंसर्स डेवलप किए हैं, तो काफ़ी आपको हेल्प मिल जाएगी यहाँ से। ओके, तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने के पहले मेक श्योर दैट आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, सो दैट कभी भी वेन एवर आई अपलोड अ न्यू वीडियो यू विल गेट अ नोटिफिकेशन ऑफ दैट। ओके, सो हियर वी गो विद द फर्स्ट क्वेश्चन, एंड द क्वेश्चन इज व्हाट मेजर्स कैन बी एडॉप्टेड बाय इंडिया टू इंटीग्रेट देयर ट्रेड विद द वर्ल्ड ट्रेड। नाउ फ्रेंड्स, क्वेश्चन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इग्नू एमकॉम एग्जाम्स में ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे। आपको क्वेश्चंस के जो थोड़ा सा घुमा फिरा के क्वेश्चंस देता है। जैसे इस क्वेश्चन में है कि इनडायरेक्टली इट हैज़ आस्क्ड फॉर हाउ इंडिया और व्हाट मेजर्स इंडिया टेक टू प्रमोट इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, एंड हियर इंटीग्रेशन का मतलब होता है टू कंबाइन। तो इंडिया का जो इंटरनेशनल ट्रेड है, आई मीन इंपोर्ट एक्सपोर्ट सिस्टम है, वो वर्ल्ड ट्रेड के साथ में कैसे इंटीग्रेट करता है, एंड व्हाट स्टेप्स आर टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू डेवलप दैट। सो दिस इज द क्वेश्चन। नाउ the first concept is here. India introduced new economic reforms in 1991 and opened doors for liberalization, privatization, and globalization. The main object was to remove all trade restrictions and encourage FDI. FDI means foreign direct investment. So, as I told you in the previous videos also, that the year 1991 was a very important year for India. And why this year was important? Because new economic reforms were introduced in India, and ये जो new economic reforms हैं, these are all about liberalization, privatization and globalization. तो तीनों के तीनों जो कॉन्सेप्ट हैं, जो तीनों स्टेप्स लिए गए हैं बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वे आर very important for the import and export trade of India. And the main object of these policies was to remove all the trade restrictions on import and export and to encourage foreign direct investment. Okay, fine. The second strategy that the India adopted was, export transactions were simplified. Okay, export transactions, that means the sale of goods एंड सेल ऑफ गुड्स के बाद में जो पेमेंट रिसीव करता है इंडियन एक्सपोर्टर, तो ये जो ट्रांजैक्शंस थे, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड रिसीविंग पेमेंट्स, मेकिंग इंक्वायरी, मार्केट रिसर्च करना, तो ये सारे ट्रांजैक्शंस को सिंप्लीफाई किया गया, राइट। एंड द नेक्स्ट स्टेप इज कम्युनिकेशन सिस्टम वाज इम्प्रूव्ड। ठीक है, सो दैट the buyers and sellers can know about each other and उनके बीच में अच्छे transactions हो सकते हैं. The third step that India took was more domestic and FDI investments were encouraged. It is not only about foreign direct investment. The government of India also encouraged the domestic investment. जो Indian entrepreneurs हैं, उनको भी बहुत सारे ऐसे स्कीम्स लॉन्च किए जहां वो लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इन इंटरनेशनल ट्रेड. द फोर्थ स्टेप was SEZ, that is special economic zones and other such parks are created to promote exports. Now इसके बारे में हम लोग पहले प्रीवियस वीडियोस में पढ़ चुके हैं कि ये जो इंडस्ट्रियल पार्क्स हैं, दिस पार्क्स वेर क्रिएटेड मेनली टू प्रमोट एक्सपोर्ट्स। ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, बिकॉज ये जो इंडस्ट्रियल एनक्लेव्स हैं, यहाँ पे जितना भी प्रोडक्शन होता है, जितने भी यूनिट्स हैं, एंड वॉट एवर दे प्रोड्यूस, दे आर ऑल फॉर एक्सपोर्ट्स. फाइन. द फिफ्थ स्टेप वॉज various types of duties and taxes were reduced.
Now duties here refers to custom duties, excise duties, like that. And taxes here means sales tax, जीएसटी, सीजीएसटी, तो ऐसे बहुत सारे टैक्सेस हैं, तो इनको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया गया. एंड देर आर लॉट ऑफ ड्यूटीज विच वे आर completely removed. Okay. Then the sixth step was innovation in new technology. Now new technology, that means जो इंडियन importers and exporters हैं उनको encourage किया गया to use the latest technology in the production of goods and services. And the last one is subsidies and other such benefits were given to encourage foreign trade. Subsidies is the type of financial help given by the government to the entrepreneurs. एंड जहाँ पे कहीं पे अगर इम्पोर्टर्स या एक्सपोर्टर्स का लॉस हो रहा है ड्यूरिंग इंटरनेशनल ट्रेड, तो इसकी भरपाई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है बाय पेइंग सब्सिडीज. सो दिस वेयर द इम्पॉर्टेंट स्टेप्स. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. एंड द क्वेश्चन इज एक्सपोर्ट प्रोस्पेक्ट्स फॉर हैंडीक्राफ्ट्स, जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्रीज. नाउ ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम्स में स्ट्राइक करता है. एंड एज वी नो दैट हैंडीक्राफ्ट्स, जेम्स और ज्वेलरी इंडस्ट्री इंडिया की है जो वर्ल्ड वाइड इट इज़ अ वेरी पॉपुलर इंडस्ट्री. एंड दैट इज़ व्हाट आई हैव रिटन इन द फर्स्ट पॉइंट हियर, दैट इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स, gems and jewelry industries is the largest in the world. The second peculiar characteristic is India has the largest number of artisans. जो कारीगर लोग काम करते हैं यहाँ पे उनके दे आर वेरी टैलेंटेड. ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, एडवांटेज है इंडिया को. एंड इट इज़ द मेजर आइटम ऑफ एक्सपोर्ट इन इंडिया. सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट जेम्स, ज्वेलरीज और हैंडीक्राफ्ट्स वाले आइटम्स ही होते हैं जो पूरे वर्ल्ड में जाते हैं इंडिया से. सो दिस इंडस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ दिस टाइप ऑफ इंडस्ट्री हैज़ फ्यू प्रॉब्लम्स जो हम लोग डिस्कस करते हैं वन बाय वन. फर्स्ट, डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्ट्स फॉर रॉ मटेरियल्स. ये जो इंडस्ट्रीज़ हैं जेम्स, ज्वेलरीज एंड हैंडीक्राफ्ट्स, मेनली ऐसे बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ हैं जो डिपेंड करती है इम्पोर्ट्स पे, मतलब फॉरेन कंट्रीज से रॉ मटेरियल्स मंगवा के यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं एज रॉ मटेरियल्स. सो दीज इंडस्ट्रीज डिपेंड ऑन फॉरेन इम्पोर्ट्स. The second problem is cutthroat competition from China. Now China is also emerging as one of the most threatening competitor for India in gems, jewelries and handicrafts industries. So that is one problem. Then imbalanced growth. Now these type of industries are basically found in many states, and some states are well developed where there is good infrastructure and all such facilities, whereas some states like Jammu and Kashmir or northeastern belt of India, so वहाँ पे इतना अच्छा ग्रोथ डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो कारीगर लोग वहाँ पे काफ़ी पुअर हैं एंड बहुत अच्छी क्वालिटी के गुड्स वो लोग बना नहीं पाते. देन द फोर्थ वन, ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी, टूल्स, इम्प्लीमेंट्स एंड मशीनरीज. Generally in these industries in India, the artisans use very old methods, very old tools, equipments. तो उससे क्या होता है कि क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती एंड इट्स अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, एंड प्रोडक्शन की जो कैपेसिटीज़ हैं वो भी बहुत कम है. तो लाइक दैट देयर आर इननंबरेबल प्रॉब्लम्स. एंड देन वी हैव लैक ऑफ ट्रेनिंग फैसिलिटीज़. ऐसी कोई इंस्टीट्यूट्स नहीं है गवर्नमेंट की जहाँ पे आर्टिसंस कैन बी ट्रेन्ड विथ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी. देन द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स. in many states the artisans do not get sufficient credit facilities or loan facilities. Okay, so they cannot buy good quality of raw materials, machines and technology. Then comes low quality and productivity. Just now I was telling you about this, that if you are not using good technology, the quality will not be accurate or according to the international standards. And the productivity, that means the volume of production will be less.
The next problem of these industries is poor working conditions and wages. बहुत अच्छे वर्किंग कंडीशंस नहीं है, पावर नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, अच्छे कम्युनिकेशन नहीं है, okay, and sanitary conditions where they are also very poor conditions, and wages salaries जो artisans को मिलती है that is also very less. And the last one is terrorism. Basically terrorism यहाँ पे लिखा गया है on the basis of what is happening in Jammu and Kashmir, because यहाँ पे ज़्यादातर टेररिज्म की वजह से जितना डेवलपमेंट होना चाहिए था उतना हुआ नहीं. So this is also one of the problem. Now let's see what are the future prospects and strategies that the government of India has taken to improve the handicraft, gems and jewelry industries. Now first, raw materials are imported of good quality at reasonable price. So this is one of the the basic hurdle for these industries, raw materials, because most of the raw materials are imported from foreign countries, and the government of India is taking all steps to help the artisans. The second one is product is should be manufactured according to the change in fashion and style, or according to the international standards. यहाँ पे जितने भी प्रोडक्ट ये लोग बनाते हैं इंडिया में, तो बेसिकली बहुत ओल्ड फैशन्ड प्रोडक्ट होते हैं. दे आर नॉट वेरी अट्रैक्टिव. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट आर्टिशियंस शुड नो about the international trends in fashions and test. Okay, the next strategy is to use latest technology. It is very easy, इसको हम लोग काफ़ी expand कर सकते हैं. The next step is stress should be given to expand the portfolio like synthetic stones, fashion jewelries, colored gemstones, etc. Now portfolio means varieties. ये जो इंडस्ट्रीज़ हैं यहाँ पे जो वर्कर्स लोग गुड्स मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी वैरायटी नहीं है, बहुत कम वैरायटीज़ हैं. तो ज़्यादा से ज़्यादा वैरायटीज़ यानी पोर्टफोलियो को एक्सपैंड करना होगा. एंड सम आर्टिफिशियल स्टोन्स, आर्टिफिशियल ज्वेलरीज, जेम स्टोन्स, इन पे थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करने की ज़रूरत है. फाइन. द गवर्नमेंट शुड सेट अप मोर डिज़ाइनिंग इंस्टीट्यूट्स in the important cities so that the artisans can be trained with latest technology and designing of the products. The next step is provision of trade fairs and exhibitions. Now this is important. Trade fair, exhibitions, ये सब होने चाहिए time to time so that the foreigners can come over there. They can have a look at the varieties of goods and products that are displayed in these trade fairs and exhibitions, and accordingly they can order for the product. And the next step is financial facility should be provided to the manufacturers, because this is one of the biggest problem for these industries. So the government is also taking a lot of steps. There are a lot of banks which provide loans to artisans at a very reasonable rate and without any documentation. Fine. Let's move on to the next question. Very important one. Provisions of India's EXIM policy. Friends, EXIM का मतलब होता है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट. तो इंडिया की जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पॉलिसी है उसके मेन प्रोविजंस क्या हैं, उसके मेन फीचर्स क्या हैं. लेट्स सी. बहुत ईजी और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. The first provision of this policy is making Indian products more competitive in the international market. ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन प्रोडक्ट को कॉम्पिटिटिव करना. Encourage the producers to use the latest technology. This is also a very common topic, common sentence जिसको हम लोग define कर सकते हैं. We can write a lot about this. The next provision is the producers should improve the quality of goods and services according to the international standards. अगेन इसको भी हम लोगों ने अभी कई बार डिस्कशन कर चुके हैं इसके बारे में. द नेक्स्ट स्ट्रैटेजी और प्रोविजन इज टू प्रोवाइड मार्केट सपोर्ट.
नाउ मार्केट सपोर्ट के अंदर इंटरनेशनल मार्केट के बारे में जानकारी देना इंपोर्टर्स एंड एक्सपोर्टर्स को कि व्हाट इज हैपनिंग इन द इंटरनेशनल मार्केट, व्हाट आर द रूल्स एंड रेगुलेशंस, what are the demands, the type of demand, the type of test fashion of the people at international level, तो like that. तो ये सारी जानकारी जो है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर्टिसंस को एंड जितने भी इम्पोर्टर्स एक्सपोर्टर्स हैं उनको प्रोवाइड करती है. And then the government of India also provides financial facilities to importers and exporters to produce goods to promote exports. And then the government of India also provides shipping facilities, transportation, warehousing facilities, ऐसी बहुत सारी अदर फैसिलिटीज़ हैं जो importers और exporters को चाहिए to promote the trade. So these facilities are also provided by the Indian government. The next very important thing is reducing tariffs and duties. Now custom duties, बहुत सारे taxes and duties हैं गवर्नमेंट ने remove किए हैं and also provides a lot of concessions so that exports can be promoted. And there are a lot of restrictions on imports and exports which have been reduced or even they have been absolutely removed from the import export trade in India. And the next one is establishing free export zones like FEZ, special export zones that is SEZ. ऐसे बहुत सारे पार्क्स बनाए गए हैं इन द सिटीज़ एंड इन दिस यूनिट्स यहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर सकते हैं एंटरप्रेन्योर्स. इसके बारे में भी हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में पढ़ा है. बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये जोन्स का, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है आपको. देन प्रोवाइडिंग सब्सिडीज फ्रॉम टाइम टू टाइम वेन एवर रिक्वायर्ड. ओके. And the lastly is liberalization of exchange rate for easy conversion of foreign currency. तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है. इसके बारे में भी मैंने प्रीवियस वीडियो में काफ़ी लेंथ में इसको समझाया था आप लोगों को. सो फ्रेंड्स, ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एंड प्लीज़ नोट डाउन ऑल दिस एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जामिनेशन. एंड इफ़ यू नीड द PDF of all these notes, these useful study notes, you can message me through my Telegram channel, the link of which I'm going to provide in the description box. So that's all for today. See you in the next video with again a set of important questions. Thank you.